Hello friends, welcome back to PLC programming channel. This video includes off delay timer and flicker timer. Off delay timer means the output will off after a time, okay, and the input will turns to off. In this case, friends, I'm recording this in English and also in Hindi, so I'm also talk in Hindi because some my clients want in English and some wants in हिंदी. तो दोस्तों इसमें एक आउटपुट को हमें ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ टाइमर एंड इसमें हमने T5 लिया है जिसमें 20 सेकंड का गैप दिया है एंड जैसे ही ये टाइमर कंटिन्यूस चलता रहेगा और अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तो जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा. इसमें ज़रूरी नहीं है कि X1 जो इनपुट है वो हमेशा ऑन रहे क्योंकि Y0 को अभी लैच कराया है. ओके, सो आगे देखते हैं ऑफ डिले टाइमर किस तरह से काम करेगा. इसमें नेक्स्ट है फ्लिकर टाइमर. फ्लिकर टाइमर में इनपुट के साथ टाइमर को ऑपरेट कराया जाता है एंड उस टाइमर से एक अनदर टाइमर और वो कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ होता रहेगा. तो आइए देखते हैं, इसको सिमुलेट करते हैं. तो सिमुलेट के बाद देखते हैं X1 जैसे ही ऑन होगा तो जो आउटपुट है वो ऑन है एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल टर्न्स टू ऑफ. ओके, सी द T5 timer calculating the time 7, 8, 9 and the final is 20 second. Okay, so and then after the 20 second the output will turns off. And in flicker timer, see the Y0 is turned to off. And in flicker timer the T2 timer initiate the function to T4 and the T4 calculating the time, and after the time is complete the output remains will not remains on. Okay, and see in flicker timer the T2 turns to on and T4 calculating time, and the Y1 is also on with the T4 timer. When the T4 timer completes the time, the Y1 turns to off. So friends, I hope you understood the program. It is very simple. If you try in your desktop, definitely you will confirm. Okay, so thank you for watching. And if you want to learn, you can DM me or message me. Okay.